Dear children, heartiest welcome in the English class. How are you? Hope that all of you are well and safe at your home. Dear children, today we read poem that is Mystery of the Talking Fan of your book Honeycomb. Dear children, as you know that this poem is written at the end of the chapter 6, that is Expert Detectives, in your book. It contains 8 lines. I divided these lines in 2 stanzas for explanation. These are the expected learning outcomes which will be achieved by us after reading this poem. Let's start. First we read stanza 1. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. Now, dear children, let's explain it. First, we write reference. The above lines have been taken from Maud Rubin's poem Mystery of the Talking Fan. Now, explanation. The poet in these lines is beautifully describes her electrical fan tries to say or demand something to him, but she could not understand it. She personifies the fan as it can talks and chatters. She tries to understand the mystery of his sounds. Moreover, the poet cannot understand what the fan is trying to convey, but hopes it is not something serious. आओ बच्चों, अब इसे हिंदी में भी जानें। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां मॉड रूबिन की कविता मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन से ली गई है। व्याख्या: कवित्री इन पंक्तियों में सुंदर ढंग से वर्णन करती है कि उसका बिजली का पंखा उससे कुछ कहने या मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती। वह पंखे का मानवीकरण करती है, जैसे कि वह बात और शोर कर सकता है। वह उसकी आवाज़ों के रहस्य को समझने की कोशिश करती है। इसके अतिरिक्त कवित्री समझ नहीं पा रही है कि पंखा क्या बताना चाहता है, परंतु उसे आशा है कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। नाउ डियर चिल्ड्रन, लेट्स गो टू स्टैंजा सेकंड. Because one day somebody oiled his little willing motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. Now, let's explain it. First, reference. The above lines have been taken from Maud Rubin's poem Mystery of the Talking Fan. Now, explanation. The poet gets curious about the sound the fan makes. She is pretty sure that fan also has feelings. The poet is unable to comprehend what exactly it means, and before the poet could succeed in decoding the mystery, somebody oiled its motor. Ever since, it functioned in such a smooth manner that no noise could be heard. The talking fan fell silent like still water. आओ बच्चों, अब इसे हिंदी में भी जानें। सबसे पहले संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां मॉड रूबिन की कविता मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन से ली गई है। व्याख्या: कवित्री पंखे की आवाज़ के बारे में उत्सुक हो जाती है। उसे पूरा यकीन है कि पंखे में भी भावनाएं होती है। कवित्री समझ नहीं पा रही है कि पंखा क्या कहना चाहता है, और इससे पहले कि वह उस रहस्य को समझने में सफल होती, किसी ने मोटर में तेल डाल दिया। जब से यह सुचारू रूप से कार्य करता है, तब से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। बात करने वाला पंखा शांत पानी की तरह खामोश हो गया। सो, डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द पोम. I hope you understand this poem very well. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this poem. Thank you. Be happy and safe.